आ, हो गया। तो क्या? लाइव अभी भी कोई भी देख सकता है, जो भी अचानक आएगा वो भी देख लेगा क्या? हाँ, देख लेना। हाँ। हाँ। ऐसा कैसा? आ भी गया हर्षवर्धन भाई। क्या आप बात सभी का आज की इस विशेष त्रिवेणी मीटिंग में स्वागत है। 22 जुलाई को हम सारे लोग वैंकूवर में होंगे, बहुत सारे। और ये प्रसारण नहीं रुकना चाहिए, इसलिए आपके सामने उपस्थित है। तो हर्षवर्धन भाई, है। हाँ जी। आपसे अरे, आपका ये थोड़ा इको हो रहा है, तो कंट्रोल कर लीजिए। हेलो। ओके, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। हर्षवर्धन भाई, आपसे गुजारिश है कि ओपनिंग प्रेयर कराएं। Should we start with the universal prayer? यस सर। Okay. Let us concentrate and recite the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light Hidden life. in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, Oh, hidden hidden light light shining in shining in every every creature. creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden Oh, love, hidden O love, hidden love, all in. embracing all in one. all love in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who may each feels who feels himself as themselves one with one thee know he is also one with every other. No, he is know he is also also one with every other. Every other. Shanti, Shanti, Shanti. थैंक यू हर्षवर्धन भाई, बहुत बहुत आभार। और तीनों स्पीकर का स्वागत है। और आज का विषय तो मालूम ही है, सेंटर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व का केंद्र। और ये धवल जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये दोनों स्पीकर्स ने, तीनों ने, कि हम हिडन साइड ऑफ थिंग्स की किताब जो है, उसे, उसके संपूर्ण जितने भी कंटेंट हैं उसको यहाँ त्रिवेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वन बाय वन। तो आज सेकंड सेक्शन का चैप्टर 7 हम करेंगे। धवल जी का एक छोटा सा परिचय दे दूँ। उन्होंने इन्फॉर्म किया है, वर्तमान में वो नियो क्यूब्स फार्मा एलएलपी में ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स के साथ प्रमुख रूप में कार्यरत है। इससे पहले जॉइंट लाइफ साइंस लिमिटेड के साथ भी काम कर चुके हैं। गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन में अहमदाबाद स्थित रोहित लॉज के सचिव हैं। बचपन से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हैं और 20 साल से ज़्यादा समय से इसकी सदस्यता में वो सम्मिलित हैं, सक्रिय रूप से। ईएस के भी सदस्य हैं और फ्री मैसनरी के रूप में भी सक्रिय जुड़े हैं, यानी करीब करीब थियोसॉफी की सारी शाखाओं में वो कार्य करते हैं। धवल जी, आपका स्वागत है। आज का विषय पार्ट 1 शुरू कीजिए। धन्यवाद। Thank you, Taralji. So, first part is centers of magnetism. We all recognize to some extent that unusual surroundings may produce special effects. We speak of certain buildings or landscapes as gloomy and depressing. We all have felt like that. Some buildings are gloomy, some are depressing. We understand that there is something saddening and repellent about a prison, something devotional about a church, and so on. Most people never trouble to think why this should be so, or if they do for a moment, turn their attention to the matter, they dismiss it as an instance of the association of ideas. If we examine into its rationale, we shall find that it operates in many cases where we have never suspected its influence, and that a knowledge of it may be of practical use in everyday life. A study of the finer forces of nature will show us not only that every living being is radiating a complex set of definite influences upon those
about him, but also that this is true to a lesser degree and in a simpler manner of inanimate objects. So first we'll talk about the cathedrals, our great cathedrals. We know that wood and iron and stone have their own respective characteristic radiations. They all emit the radiations. But the point to be emphasized just now is that they are all capable of one influence and then pouring it out again. So iron, wood, stone, they absorb our influence and they pour out of themselves. To understand this, we must first of all remember the circumstances under which those buildings were erected. A modern brick church run up by a contract in the shortest possible time has indeed but little sanctity about it. But in medieval days, faith was greater and the influence of the outer world less prominent. In very truth, man prayed as they built our great cathedrals and laid every stone as though it had been an offering upon an altar. When this was the spirit of the work, every such stone became a veritable talisman, charged with the reverence and devotion of the builder, and capable of radiating those same waves of sensation upon others, so as to stir in them similar feelings. The crowds who came afterwards to worship at the shrine not only felt these radiations, but themselves strengthened them in turn by the reaction of their own feelings. Still more is this true of the interior decoration of the church. Every touch of the brush in coloring of a triptych, every stroke of the chisel in the sculpture of a statue was a direct offering to God. Thus, the completed work of art is surrounded by an atmosphere of reverence and love, and it distinctly shades these qualities upon the worshippers. Such a devotional effect, as is described in connection with a picture or a statue, may be entirely apart from its value as a work of art. For example, the Bombino at the Ara Scioli at Rome is supremely inartistic object. If you see this statue, it is not that much artistic. Yet, it has unquestionably considerable power in evoking devotional feeling among the masses that crowd to see it. If it were really a work of art, the fact would add but little to its influence over most of them. From these considerations, it is evident that these various ecclesiastical properties, such as statues, pictures, and other decorations, have a real value in the effect which they produce upon the worshippers. And the fact that they thus have a distinct power, which so many people can feel, probably accounts for the intense hatred felt for them by the savage fanatics who miscalled themselves Puritans. They realized that the power which stood behind the church worked to a great extent through these objects as its channels, and though their loathing for all higher influences was considerably tempered by fear, they yet felt that if they could break up these centers of magnetism, that would to a certain extent cut off the connection. And so, in their revolt against all that was good and beautiful, they did all the harm that they could. In all these splendid medieval buildings, the sentiment of devotion absolutely and literally exudes from the walls. So, all these walls of the cathedrals are charged with those feelings because for centuries, devotional thought forms have been created in them by successive generations.
in strong contrast to this is the atmosphere of criticism and disputation, which may be felt by any sensitive person in the meeting houses of some of the sects. In many a conventicle in Scotland and in Holland, this feeling stands out with startling prominence, so as to give the impression that the great majority of the so-called worshippers have had no thought of worship or devotion at all, but only of the most sanctimonious self-righteousness and of burning anxiety to discover some doctrinal flaw in the wearisome sermon of their unfortunate minister. An absolutely new church does not at first produce any of these effects. And for in these days, workmen build a church with the same lack of enthusiasm as a factory. So, in today's modern world, the church or the buildings are made without any kind of enthusiasm. They are made with the particular deadline. As soon as the bishop consecrates it, a decided influence is set up as the effect of that ceremony. A few years of use will chart the walls very effectively, and a much shorter period than that will produce the result in a church where the sacrament is reserved and where perpetual adoration is offered. So, this was all about the cathedrals or the churches. Now, we'll talk about the temples. Among Hindus, the Vaishnavite have a quite profound devotion. Regarded solely from the point of view of charging the walls of the temple with devotional influence, we may perhaps understand by taking a physical illustration of a number of sailors pulling at a rope. We know that when that is being done, a sort of chant is generally used in order to ensure that the man shall apply their strength at exactly the same moment, and in that way, a much more effective pull is produced than would be achieved if each man put out exactly the same strength but applied it just when he felt that he could, and without any relation to the work of the others. The same devotion is also seen in the Shiva temples. In such a shrine as that at Madura, for example, an exceedingly powerful influence radiates from the Holy of Holies. Completely different again is the impression which surrounds a Buddhist temple. We have perhaps less of direct devotion, for to a large extent devotion is replaced by gratitude. So in Hindu temples the main feeling is of devotion, in Buddhist temples the main feeling is of gratitude. The prominent radiation is always one of joyfulness and love. On other hand, a complete contrast is represented by Mohammedan mosque. Devotion of a sort is present here also, but it is distinctly a militant devotion, and the particular impression that it gives one is that of a fiery determination. On the other hand, the Jewish synagogue again is like none of the others, but has a feeling which is quite distinct and curiously dual. So, what is this feeling? So, it is exceptionally materialistic on one side, and on the other, full of a strong, pathetic longing for the return of the vanished glories. So, in synagogue, Jewish synagogue, we will have the feeling of materialism as well as to return their vanished glories. So that was all about part one, and centers of magnetism. Those are churches, then temples, and other great buildings of Buddhism or Muslims. So that's all for part one. Thank you. Sir, unmute, please. That was very nice, Dhawal. It was very smooth and very meaningful. Thank you. Now we move to the Gujarati version.
कोमल जी, आपका स्वागत है। कोमल जितेश मोदी जी एमसीए है और वर्तमान में वो सिमकॉम डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डिजिटल मार्केटिंग हेड के रूप में कार्यरत है। वे गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के रोहित लॉज अहमदाबाद के सदस्य हैं। बचपन से ही वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी है और जाहिर है 20 से ज़्यादा सालों से वे भी जुड़ी हुई हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य तो हैं ही, साथ में वो फ्री मैसन भी है। आपका स्वागत है। आप गुजराती में आज का विषय देखिए। धन्यवाद। થેન્ક યુ તરલભાઈ. તો આજે આપણે વાત કરીશું મેગ્નેટિઝમના કંટ્રોલની આપણા પર થતી અસરો. એ પછી આપણા દેવાલયોની આપણે એની પર થોડી ચર્ચા કરીશું અને એવી જ રીતે આપણે મંદિરો અને એના અસામાન્ય વિકાસની વાત કરીશું. રાઈટ, તો હું સ્ટાર્ટ કરું છું હવે. મેગ્નેટિઝમ કેન્દ્રોની આપણા પર થતી અસરો. આપણને બધાને એ અનુભવ થયેલો હોય છે કે જે તે સ્થળનું પોતાનું એક આગવું વાતાવરણ અને અસર હોય છે. ઘણી ઇમારતો કે જે જગ્યાઓ આપણામાં ગમગીની પેદા કરી શકે છે, મોટાભાગના લોકો આ બાબત વિશે વિચાર કરવાની તકલીફ લેતા નથી. પરંતુ આ બાબત આપણા જીવનને એવી રીતે અસર કરે છે કે જેના વિશે આપણે અનુમાન પણ લગાવી શકીએ. જેવી રીતે દરેક જીવિત વસ્તુ પોતાની આસપાસની વસ્તુઓ પર અસર કરે છે, તેવી જ રીતે દરેક નિર્જીવ વસ્તુ પણ પોતાની આસપાસની બીજી વસ્તુઓ પર અસર કરે છે. લાકડું, ધાતુ અને પથ્થર પોતપોતાની લાક્ષણિક અસરો છોડતા હોય છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ તેઓ મનુષ્યની અસરને પોતાનામાં ગ્રહણ કરવાની અને પછી તેને બહાર ફેંકવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. આપણા મહાન અને ભવ્ય દેવાલયોમાં અનુભવાતી ભક્તિનો મૂળભૂત સ્ત્રોત શું હોઈ શકે? તેનું કારણ માત્ર ને માત્ર તેના ઇતિહાસ કે એક હકીકત સાથે જોડાયેલું નથી કે મનુષ્ય વર્ષોથી અહીંયા પૂજા અને પ્રાર્થના માટે આવતો રહ્યો છે. આ મૂળભૂત સ્ત્રોતને સમજવા માટે સૌ પ્રથમ તો આપણે એક સંજોગો અને પરિસ્થિતિઓને સમજવી પડે કે જેની અંદર આવા દેવાલયોનું નિર્માણ થયેલું હોય છે. હાલના સમયમાં દેવાલયોના નિર્માણનું કાર્ય કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી થાય છે અને શક્ય એટલા ઓછા સમયમાં આ નિર્માણ કાર્ય પતાવી દેવામાં આવે છે. પરંતુ જૂના સમયમાં ભક્તિભાવ ખૂબ જ હતો. દેવાલયોના બાંધકામ સાથે સંકળાયેલા લોકો બાંધકામની સાથે સાથે એક ભક્તિભાવ પણ ધરાવતા હતા. દેવાલયોની દરેક ઘંટ એવી રીતે મૂકવામાં આવી હતી જાણે ઈશ્વરને ખરેખર તે અર્પણ કરી રહ્યા હોય. જ્યારે કાર્ય કરવાની આવી ભાવના હોય ત્યારે આવો દરેક પથ્થર તસ્લીમાન બની જતો હોય છે. દરેક પથ્થર નિર્માણ કાર્યમાં ભાગ લેનારની ભક્તિ અને સમર્પણ ભાવને પોતાની અંદર ગ્રહણ કરે છે, તેમજ તેને પોતાની બહાર પણ ફેંકે છે. દેવાલયોમાં પૂજા અર્ચના માટે આવતા ભક્તો પર દેવાલયોની દિવાલોમાંથી આ ભક્તિ અને સમર્પણ ભાવની આ અસર ફેંકાય છે અને બદલામાં ભક્તો પણ આ ભાવનામાં પોતાનો ભાવ ઉમેરીને તેને વધુ મજબૂત બનાવે છે. આ જ બાબત દેવાલયોની અંદર સજાવટ માટે પણ એટલી જ સાચી છે. દિવાલોને કરવામાં આવતા રંગ કે પછી મૂર્તિઓને ઘડવામાં વાપરવામાં આવેલી ફરસીનો દરેક પ્રહાર એ જાણે કે ઈશ્વરને કંઈ અર્પણ કરી રહ્યા હોય એ ભાવથી કરવામાં આવતો હતો. આથી કાર્ય પૂરું થયા બાદ ત્યાં અંદર અને પ્રેમનું વાતાવરણ બનતું હતું અને આ જ ગુણો પૂજા કરવામાં આવતા લોકો પર પોતાની અસર કરતા હતા. દેવાલયોના રંગ કે મૂર્તિ સાથે જોડાતો આવો ભક્તિભાવ એ તેમના કળાત્મકતાની કિંમત કરતા સાવ જુદો હોય છે. રોમના સારા સિયોલી ખાતે આવેલા બોમ્બેદિનોના પ્રતિમામાં કોઈ ખાસ કળાત્મકતા નથી, તેમ છતાંય તેનામાં એટલી ક્ષમતા છે કે તે આવેલા લોકોમાં ભક્તિભાવ પેદા કરી શકે છે. જો આ પ્રતિમા કળાત્મક હોય
તો પણ તેનાથી ભક્તિભાવથી અસરમાં કોઈ ખાસ ફાયદો ન થાત. એ બાબત તો સ્પષ્ટ થાય છે કે દેવાલયો અને તેની સંપત્તિઓ જેવી કે પ્રતિમાઓ, ચિત્રો અને બીજી સજાવટોની પોતાની એક આગવી જ અસર હોય છે. આ અસર પૂજા કરવા આવતા લોકો પર પણ અનુભવી શકાય છે. આ અસરને લઈને ઘણા બીજા ધર્મના જનોની લોકોમાં નફરતની લાગણી પણ પેદા થતી હોય છે. તેઓ જાણે કે દેવાલયોની શક્તિ તેની દિવાલો, ચિત્રો તેમજ મૂર્તિઓ દ્વારા બહાર આવે છે અને લોકો પર અસર કરે છે. આથી જ તેઓ બીજા ધર્મની આવી સંપત્તિઓનો વિનાશ કરે છે. મધ્યયુગની બધી જ ભવ્ય ઇમારતોની દિવાલમાંથી સતત ભક્તિભાવની લાગણી બહાર ફેંકાતી હોય છે. જેમ કે સદીઓથી પેઢી દર પેઢી તેમાં ભક્તિભાવ વિચાર રૂપો પેદા થતા રહ્યા હોય છે. આનાથી ઉલટું ઘણા સંપ્રદાયોમાં સભાગૃહોમાં ટીકા ટિપ્પણી કે ઝઘડાનું વાતાવરણ જોવા મળે છે કે જે કોઈ પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ અનુભવી શકે છે. સ્કોટલેન્ડ અને હોલેન્ડની ઘણી કન્વેન્ટિકલ સંસ્થાઓ આવી લાગણીઓ જોવા મળે છે. અહીં આવતા મોટા ભાગના લોકોમાં ભક્તિભાવ કે ઈશ્વર પ્રત્યેના પ્રેમની ભાવના હોતી નથી. બીજાના કાર્યોમાં ભૂલ કાઢવાની અને પોતાનું સત્ય પ્રસ્થાપિત કરવાની જ્વલંત ભાવના જ તેમનામાં જોવા મળે છે. નવા બનેલા દેવાલયોમાં શરૂઆતમાં આવો ભક્તિભાવ હોતો નથી, કેમ કે હવે કોઈ આવા ઉત્સાહથી કાર્ય કરતું નથી. પરંતુ ચોક્કસ પૂજા વિધિનો દ્વારા આ અસર પેદા કરી શકાય છે. અમુક વર્ષોના ઉપયોગ બાદ જે તે દિવાલોના વાતાવરણમાં ભક્તિભાવની અસર આવી જ અસર થતી હોય છે. હિન્દુઓમાં પણ વિષ્ણુ સંપ્રદાયના લોકોમાં ઊંડો ભક્તિભાવ જોવા મળે છે. મંદિરોની દિવાલની ભક્તિભાવથી ભરી દેવાની પ્રક્રિયાને એક સાથે દોરડું ખેંચતા નાવિકોના ઉદાહરણથી પણ સમજી શકાય છે. જ્યારે નાવિકો દોરડું ખેંચતા હોય છે ત્યારે એક સાથે કંઈ ગાતા રહેતા હોય છે. ગીતના કોઈ ચોક્કસ શબ્દ પર બધા એક સાથે દોરડું ખેંચવા માટે જોર લગાવે છે. આથી દોરડું આસાનીથી ખેંચાઈ જાય છે. જો દરેક નાવિક અલગ અલગ ક્ષણે પોતાનું બળ વાપરે તો દોરડું આસાનીથી ખેંચી ન શકાય. અહીં દરેક જણ એકબીજાની શક્તિનો ફાયદો ઉઠાવીને કાર્ય પૂર્ણ કરે છે. શિવ સંપ્રદાયના મંદિરોમાં પણ આવો જ ભક્તિભાવ જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે મથુરાના શિવ ભગવાનના મંદિરમાં મૂર્તિમાંથી સતત શક્તિશાળી અસર ભક્તો પર વહેતી રહેતી હોય છે. એવી જ રીતે બૌદ્ધ ધર્મના મંદિરોમાં પણ આવી જ અસરો જોવા મળે છે. અહીં ભક્તિભાવ કરતા કૃતજ્ઞતાની ભાવના વધુ જોવા મળે છે. આ સાથે આનંદ, ઉત્સાહ અને પ્રેમની ભાવના પણ ભળેલી હોય છે. તથા મસ્જિદોની અંદર એક આક્રમક ભક્તિભાવ તથા અડગ નિશ્ચિતતાની ભાવના પણ પ્રવર્તમાન હોય છે. યહૂદીઓના સાઇનાગોગના વાતાવરણમાં ભૌતિકતાની સાથે સાથે પોતાની ગુમ થયેલી ભવ્યતાને પાછી મેળવવા માટેની પણ ભાવના વધુ જોવા મળે છે. તો અહીંયા હું મારો પાર્ટ 1 કમ્પ્લીટ કરીશ, જેની અંદર મેં અત્યાર સુધી મેગ્નેટિઝમ કેન્દ્રોની આપણા પર થતી અસરો, આપણા દેવાલયો, મંદિરોને મેં અહીંયા કવર કર્યા છે. આગળનું હું પાર્ટ 2માં તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરીશ. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच. राइट ऑन टाइम. अर्चना जी, आपका स्वागत है. अर्चना जी का एक परिचय देना चाहूँगा. उन्होंने मुंबई से माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी और बड़ौदा से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया है. वित्तीय संस्थान में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही हैं. भारत और अमेरिका में स्कूल, कॉलेज और पेशेवर स्तर पर उन्होंने गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में नाटक किए हैं. FTIA पुणे में कोर्स किया है और वृत्तचित्रों और कॉर्पोरेट फिल्मों में भी सहायक निर्देशक की भूमिका उन्होंने निभाई है. वे नेचुरोपैथी में की वैकल्पिक चिकित्सा व्यावसायिक रूप से उन्होंने अध्ययन किया है
और इसी के साथ वे बहुत सक्रिय हैं थियोसॉफी सोसाइटी में, त्रिवेणी में सक्रिय हैं और बॉम्बे थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी अपना योगदान देती हैं। अर्चना जी, भाग वन हिंदी में समय। धन्यवाद तरल जी। अ, तो आज हम अध्याय 7वां वस्तुओं का छिपा हुआ पहलू, भाग 1, चुंबकत्व के केंद्र। हम सभी कुछ हद तक ये मानते हैं कि असामान्य परिवेश विशेष प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हम कुछ इमारतों या परिदृश्यों को उदास और निराशाजनक कहते हैं। हम समझते हैं कि जेल में कुछ दुखद और विकर्षण होता है, चर्च में कुछ भक्तिपूर्ण होता है, इत्यादि। अधिकांश लोग यह सोचने की जहमत नहीं उठाते कि ऐसा क्यों होना चाहिए, या ये यदि वे एक पल के लिए भी इस विषय पर ध्यान देते हैं तो इसे विचारों के मेल का उदाहरण मानकर खारिज कर देते हैं। यदि हम इसके औचित्य की जांच करें तो हम पाएंगे कि हम कई ऐसे मामलों में भी कार्य करते हैं जहां हमें इसके प्रभाव का कभी अंदाजा भी नहीं होता, और इसका ज्ञान दैविक जीवन में व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो सकता है। प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का अध्ययन हमें न केवल यह दिखाएगा कि प्रत्येक जीव अपने आसपास के लोगों पर निश्चित प्रभावों का एक जटिल समूह विकर्ण कर रहा है, बल्कि ये भी एक यह निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ हद तक और सरल रूप से सत्य भी है। अब हम बात करेंगे हमारे महान गिरजाघरों की। हम जानते हैं कि लकड़ी, लोहा और पत्थर की अपनी अपनी विशिष्ट विकर्णें होती हैं, लेकिन अभी जिस बात पर जोर दिया जाना चाहिए वह ये है कि सभी मानवीय प्रभाव को सोखने और फिर उसे पुनः बाहर निकालने के लिए सक्षम है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उन परिस्थितियों को याद करना होगा जिनमें ये इमारतें बनाई गई थी। एक आधुनिक ईंटों का गिरजाघर जिसे अनुबंध द्वारा कम से कम समय में बनाया गया हो, वास्तव में हमें बहुत कम पवित्रता दिखाता है, रखता है। लेकिन मध्यकाल में आस्था अधिक थी और बाहरी दुनिया का प्रभाव बहुत कम था। वास्तव में मनुष्य हमारे महान गिरजाघरों का निर्माण करते समय प्रार्थना करते थे और प्रत्येक पत्थर को इस प्रकार रखते थे कि मानो वह किसी वेदी पर भेंट हो। जब कार्य की यही भावना होती तो ऐसा प्रत्येक पत्थर एक वास्तविक ताबीज बन जाता, जो निर्माता की श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत होता और दूसरों पर भी उन्हीं संवेदनाओं की तरंगे विकर्ण करने में वो सक्षम होता, ताकि उनमें भी समान भावनाएं जागृत हों। बाद में मंदिर में पूजा करने आए वाले लोगों को न केवल इन विकर्णों को महसूस करते, बल्कि स्वयं अपनी भावनाओं की प्रतिक्रिया से उन्हें और भी मजबूत बनाते। अब बात करते हैं चर्च की आंतरिक सजावट के बारे में। तो यहाँ भी ये सच है। त्रिपिट के रंग में हर एक ब्रश का हर स्पर्श, तुलिका का हर स्पर्श, मूर्ति की नक्काशी में छेनी का हर वार ईश्वर को प्रत्यक्ष अर्पण था। इस प्रकार कलाकृति श्रद्धा और प्रेम के वातावरण से घिरी होती थी और यह इन गुणों को भक्तों पर स्पष्ट रूप से बिखेरती है। किसी चित्र या मूर्ति के संबंध में वर्णित भक्तिमय प्रभाव कलाकृति के रूप में उसके मूल्य से बिल्कुल अलग हो सकता है। अभी यहाँ बात करते हैं रोम के आरा कोयली में बॉम्बिनो एक शिशु का एक अत्यंत अकलाकृतिक वस्तु है। फिर भी उसे देखने के लिए उमड़ वाली भीड़ में वो भक्ति भावना जगाने के लिए निसंदेह अद्भुत शक्ति धराता है। यदि ये वास्तव में कलाकृति होती तो यह तथ्य अधिकांश लोगों पर इसके प्रभाव को नगण्य ही बढ़ाता। इन विचारों से ये स्पष्ट है कि इन विभिन्न धार्मिक संपत्तियों जैसे मूर्तियों, चित्रों और अन्य सजावटों का भक्तों पर उनके प्रभाव में वास्तविक मूल्य है, और यह तथ्य है कि उनके पास एक विशिष्ट शक्ति है जिसे बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं। संभवतः उन बर्बर कंठर पत्थियों द्वारा उनके प्रति महसूस की गई तीव्र घृणा का कारण हो, जिन्होंने खुद को प्यूरिटन कहा था। उन्होंने महसूस किया कि चर्च के पीछे जो शक्ति थी वह इन वस्तुओं के माध्यम से काफी हद तक काम करती थी
और हालांकि सभी उच्च प्रभावों के लिए उनकी घृणा भय काफी हद तक कम भी हो गई थी, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि यदि वे चुंबकत्व के इन केंद्रों को तोड़ सकते हैं तो यह एक निश्चित सीमा तक कनेक्शन को काट देगा, और इसीलिए जो कुछ भी अच्छा और सुंदर था उसके खिलाफ अपने विद्रोह में उन्होंने वह सब कुछ को नुकसान पहुंचाया जो वो कर सकते थे। इन सभी भव्य मध्ययुगीन इमारतों में भक्ति की भावना दीवारों से पूर्णतः और अक्षरशः झलकती है, क्योंकि सदियों से इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तिमय विचार रूप रचे बसे हैं। इससे ठीक विपरीत आलोचना और वाद विवाद का यह वातावरण है जो कुछ संप्रदायों के सभा भवनों में कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसे महसूस भी कर सकता है। स्कॉटलैंड और हॉलैंड के कई मठों में यह भावना आश्चर्यजनक रूप से प्रमुखता से उभरती है, जिससे यह आभास होता है कि तथाकथित उपासकों ने के विशाल बहुमत ने पूजा या भक्ति के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं है, बल्कि केवल अत्यंत पाखंडी आत्मधार्मिकता और अपने अभागे पादरी के थकाऊ उपदेश के सिवा कोई सैद्धांतिक दोष खोजने की तीव्र व्याकुलता के बारे में सोचा है। एक बिल्कुल नया चर्च शुरू में इनमें से कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि आजकल मजदूर मजदूर एक कारखाने की तरह एक एक तरह की उदासीनता के साथ एक चर्च का निर्माण करते हैं। जैसे ही बिशप इसे प्रतिष्ठित करता है, उस समारोह के प्रभाव के रूप में एक निश्चित प्रभाव स्थापित हो जाता है। कुछ वर्षों के प्रयोग से दीवारें बहुत प्रभावी ढंग से चार्ज हो जाएंगी तथा इससे बहुत कम समय में उसके चर्च के परिणाम प्राप्त होंगे, जहां संस्कार आरक्षित है या जहां सतत आराधना की जाती है। अब हम बात करेंगे मंदिरों की। हिंदुओं में और खास करके वैष्णवों की गहरी भक्ति होती है। इसे केवल मंदिर की दीवारों पर भक्तिमय प्रभाव डालने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम इसे कई नाविकों द्वारा रस्सी खींचने की एक भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नाविक ठीक उसी समय अपनी शक्ति लगाएं, एक प्रकार का मंत्रोच्चार किया जाता है और वह इस प्रकार एक अधिक प्रभावी खिंचाव उत्पन्न होता है, जो तब प्राप्त नहीं होता जब केवल जब प्रत्येक व्यक्ति ठीक समान शक्ति लगाता, लेकिन उसे ठीक उसी समय लगाता जब उसे लगता कि वह लगा सकता है और दूसरों के कार्य से उसका कोई संबंध नहीं होता। यही भक्ति शिव मंदिरों में भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए मदुरा जैसे मंदिर में पावन स्थान में के एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव निकलता है। एक बौद्ध मंदिर में के आसपास की छाप भी पूरी तरह से अलग होती है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष भक्ति शायद कम होती है, क्योंकि काफी हद तक भक्ति का स्थान स्थानों में कृतज्ञता ले लेती है। एक पूर्ण विरोधाभास में देखें तो मोहम्मद मस्जिद द्वारा दर्शाया गया है। एक प्रकार की भक्ति वहां भी तो मौजूद है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक उग्र भक्ति है, और जो विशेष प्रभाव ये देता है कि वह एक उग्र दृढ़ संकल्प का है। और इस तरफ यहूदी आराधनालय, वो भी अन्य आराधनालयों की तरह नहीं है, लेकिन इसमें एक भावना है जो बिल्कुल अलग है और विचित्र रूप से दोहरी है। एक और असाधारण रूप से भौतिकवादी और दूसरी ओर लुप्त गौरव की वापसी के लिए एक मजबूत दयनीय लालसा से भरी हुई। तो यहाँ भाग 1 समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और धवल जी, आप अपना भाग 2 शुरू कीजिए इंग्लिश। थैंक यू। Okay, thank you, Taralji. जी। So part 2, it will cover sites, relics, and ruins. So a church or a temple is frequently erected to commemorate the life and death of some saint. And in the first instance, such a fane is built upon a spot which has some special connection with him. It may be the place where he died, the spot where he was born, or where some important event of his life occurred. The Church of Nativity at Bethlehem and that of the crucifixion at Jerusalem are instances of this.
as is also the great stupa of Bodh Gaya, where the Lord Gautama attained his Buddhahood, or the temple of Vishnupad, where it is supposed that Vishnu left his footmark. All such shrines are erected not so much from a historical sense, but as with the idea that the spot is especially blessed, specifically charged with a magnetism which will remain through the ages and will radiate upon and benefit those who bring themselves within the radius of its influence. The spot at which the Lord Buddha gained the step which gives him that august title is charged with a magnetism which causes it to glow forth like a sun for everyone who has clairvoyant vision. This is calculated to produce the strongest possible magnetic effect on anyone who is naturally sensitive to such influence or who deliberately makes himself temporarily sensitive to such influence by putting himself in an attitude of heartfelt devotion. In an article on Bodh Gaya in the Lotus Journal, Alkyoni wrote, "When I sat quietly under the tree for a while with Mrs. Besant, I was able to see the Lord Buddha as he had looked when he sat there. Indeed, the record of his meditation is still so strong that it needs only a little clairvoyance to see him even now. I had the advantage of having met him in that life in 588 BC and become one of his followers, so that it was easier for me to see him again in this present life. But I think almost anyone who is a little sensitive would see him at Bodh Gaya by staying quite quiet for a little time because the air is full of his influence, and even now there are always great devas bathing in the magnetism and guarding the place. So these are the words by J. Krishnamurti. He wrote this paragraph in the journal in called the Lotus Journal. Other churches, temples, or dagobas are sanctified by the possession of relics of some great one. And here again, the connection of ideas is obvious. It is customary for those who are ignorant for these matters to ridicule the idea of paying reverence to the fragment of bone which once belonged to a saint. But though reverence paid to the bone may be out of place, the influence radiating from the bone may nevertheless be quite a real thing and well worthy of serious attention. That the trade in relics has led all the world over to fraud on the other hand and blind credulity on the other is not a thing to be disputed, but that by no means alters the fact that a genuine relic may be a valuable thing. Whatever has been part of the physical body of a great one, or even of the garments which have clothed that physical body, is impregnated with his personal magnetism. That means that it is charged with the powerful waves of thought and feeling which used to issue from him, just as an electrical battery may be charged. Such force as it possesses is intensified and perpetuated by the thought waves poured upon it as the years roll by the faith and devotion of the crowds who visit the shrine. This, when the relic is genuine, but most relics are not genuine. Even then, though they have no initial strength of their own, they acquire much influence as time goes on, so that even a false relic is by no means without effect. Therefore, anyone putting himself into a receptive attitude and coming into the immediate neighborhood of a relic will receive into himself its strong vibrations and soon will be more or less attuned to them. Since
those vibrations are unquestionably better and stronger than any which he is likely to generate on his own account. This is a good thing for him. For the time being, it lifts him onto a higher level, it opens a higher world to him. And though the effect is only temporary, this cannot but be good for him. An event which will leave him for the rest of his life slightly better than if it had not occurred. This is the rationale of the pilgrimages, and they are quite often really effective. In addition to whatever may have been the original magnetism contributed by the holy man or relic, as soon as the place of pilgrimage is established and numbers of people begin to visit it, another factor comes into play, of which we have already spoken in the case of churches and temples. The place begins to be charged with the devotional feeling of all those hosts of visitors, and what they leave behind reacts upon their successors. Thus, the influence of one of these holy places usually does not decrease as time passes. For if the original force tends slightly to diminish, on the other hand, it is constantly fed by new accessions of devotion. Indeed, the only case in which the power even fades is that of a neglected shrine, as for example, when a country is conquered by people of another religion to whom the older shrines are as nothing. Even then, the influence, if it has been originally sufficiently strong, persists almost without diminution for many centuries, and for this reason even ruins have often a powerful force connected with them. For example, the Egyptian religion has been practiced little since the Christian era, yet no sensitive person can stand amidst the ruins of one of its temples without being powerfully affected by the stream of its thought. In this particular instance, another force comes into play. The Egyptian architecture was of a definite type, intentionally so erected for the purpose of producing a definite impression upon its worshippers, and perhaps no architecture has ever fulfilled its purpose more effectively. The shattered fragments which remain still produce the effect to no unconsiderable degree, even upon the members of an alien race, altogether out of touch with the type of old Egyptian civilization. For the student of comparative religion who happens to be sensitive, there can be no more interesting experience than this: to bathe in the magnetism of the older religions of the world, to feel their influence as their devotees felt it thousands of years ago, to compare the sensations of Thebes or Luxor with those of the Parthenon or of the beautiful Greek temples of Gargenti, or those of Stonehenge with the vast ruins of Yucatan. The religious life of the old world can best be sensed in this way through the agency of its temples, but it is equally possible in the same way to come into touch with the daily life of those vanished nations by standing among the ruins of their palaces and their homes. This needs perhaps a keener clairvoyant sense than the other. The force which permeates the temple is powerful because it is to a considerable extent one pointed. Because all through the centuries, people have come to it with one leading idea of prayer or devotion, and so the impression made has been comparatively powerful. In their homes, on the other hand, they have lived out their lives with all kinds of different ideas and warring interests, so that the impressions often cancel one another. Nevertheless, there emerges, as years roll on, a sort of least common multiple of all their feelings, which is characteristic of them as a race,
And in this can be sensed by one who has the art of entirely suppressing those personal feelings of his own, which are so far nearer and more vivid to him, and listening earnestly to catch the faint echo of the life of those times so long ago. Such study often enables one to take a juster view of history, manners, and customs which startle and horrify us because they are so remote from our own, can in this way be contemplated from the point of view of those to whom they were familiar, and in seeing them thus, one often realizes for the first time how entirely we have misconceived those men of the past. So, with this, I conclude part 2. Thank you. Yes, Komalji, you can go ahead with part 2 in Gujarati. હા હા યસ તો આપણે પાર્ટ 2 ની અંદર તીર્થ સ્થાનો અને અવશેષો એની વાત કરીશું. મોટા ભાગના તીર્થ સ્થાનો એ જે તે સંત અને મહાપુરુષોના જીવન સાથે સંકળાયેલો હોય છે. આ તીર્થ સ્થાનો એ જે તે સંતની જન્મભૂમિ કે કર્મભૂમિ હોય છે. બેથલેહામ અને જેરુસલેમ જેવા સ્થળોએ આવેલા ચર્ચ, ગૌતમ બુદ્ધને જ્યાં બૌદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થયું એ બૌદ્ધ ગયામાં આવેલા સ્તૂપ કે વિષ્ણુપદમાં આવેલું મંદિર એ આના ઉદાહરણ છે. ગૌતમ બુદ્ધને જ્યાં બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું તે જગ્યાએ આજે પણ એમની અસરો જોવા મળે છે. ગૂઢ શક્તિ ધરાવતી આંખો વાળી વ્યક્તિને તે જગ્યાએ સૂર્યની જેમ ચમકતી હોય તેવી દેખાય છે. કોઈ પણ સંવેદનશીલ માણસ તેમની પ્રભાવી અસરને અનુભવી શકે છે. ધ લોટ્સ નામની જર્નલમાં બૌદ્ધ ગયા ઉપરના એક લેખમાં આ અકલ્પીય વાતોને નીચે મુજબ લખ્યું છે. જ્યાં હું તે ઝાડ નીચે શ્રીમતી બેસન્ટ સાથે થોડી વાર બેઠો હતો ત્યારે ભગવાન બુદ્ધને તેઓ જ્યારે એ સ્થાને બેસતા હશે ત્યારે જેવા દેખાતા હશે તેવા જોઈ શક્યો. ખરેખર તેમના ધ્યાનનો પ્રભાવ એટલો મજબૂત છે કે થોડી પણ ગૂઢ દ્રષ્ટિ ધરાવતો મનુષ્ય આજે પણ તેમને ત્યાં જોઈ શકે છે. ઈસવીસન પૂર્વે 888 વર્ષના સમયમાં ત્યારના જીવનમાં મને તેમને મળવાનો લાભ મળ્યો હતો. હું તેમનો એક અનુયાયી હતો અને તેથી મારા માટે તેમને આ જીવનમાં ફરીથી જોવું સરળ બન્યું હતું. પરંતુ મને લાગે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે થોડી પણ સંવેદનશીલ હશે તે બૌદ્ધ ગયામાં થોડો સમય પણ જો શાંતિથી બેસશે તો ભગવાન બુદ્ધને જોઈ શકશે. કેમ કે અહીંની હવામાં ભગવાન બુદ્ધની અસરોથી ભરેલી છે અને હાલના સમયમાં પણ દેવતાઓને તેમની અસરમાં નાતા હોય છે અને તે સ્થાનની રક્ષા પણ કરતા હોય છે. ઘણા દેવાલયોમાં મહાન સંતોના અસ્થિઓ કે તેમના શરીરનો કોઈ ભાગ રાખવામાં આવતો હોય છે. તેથી પાછળનો હેતુ પણ આવો જ હોય છે. જે લોકોને આ બાબત વિશે જ્ઞાન હોતું નથી તેઓ આ વિચારને હસી કાઢે છે. કોઈ સંતના અસ્થિ કે તેના શરીરના જે તે અંગની પૂજા કેવી રીતે થઈ શકે? પરંતુ અસ્થિ કે જે તે અંગમાંથી જે તરંગો બહાર ફેંકાતા હોય છે તે એક સાચું વસ્તુ છે અને તેની અવગણના ન થઈ શકે. આનો પણ હવે વેપાર થવા લાગ્યો છે. તેમજ તેના વિશેની અંધશ્રદ્ધા પણ હાલ વધી રહી છે. આવો સાચો અવશેષ એ ખરેખર એક મૂલ્યવાન વસ્તુ છે. શરીરના જે તે અંગના અવશેષ કે પછી જે તે સંતે પહેરેલું વસ્ત્ર અંદરથી અસર રહેલી હોય છે. જેવી રીતે કોઈ બેટરી ચાર્જ થયેલી હોય તેવી રીતે આ અંગ કે વસ્ત્ર પણ સંતના વિચારો અને લાગણીઓથી ચાર્જ થયેલા હોય છે. દર્શનાર્થીઓ દ્વારા પણ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના વિચાર તરંગો આવા અવશેષો ઉપર વર્ષોથી પડ્યા કરતા હોવાથી તેમની એ શક્તિમાં અનેક ગણો વધારો થતો જ રહે છે.
આવું ત્યારે જ શક્ય બને છે કે જ્યારે અવશેષ સાચો હોય, પરંતુ ઘણા ખરા કિસ્સાઓમાં આ અવશેષો નકલી પણ હોય છે. આ નકલી અવશેષોમાં શરૂઆતમાં કોઈ શક્તિ હોતી નથી, પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ તેમ લોકોની ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના વિચારોથી તેમનામાં આવી શક્તિ આવવા માંડે છે. આથી જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ખુલ્લા મનથી આવા અવશેષોની નજીક જાય છે તેને જે તે અવશેષ તરફથી મજબૂત આંદોલનો પ્રાપ્ત થાય જ છે. મનુષ્ય પોતે પેદા કરી શકે તેના કરતા આ આંદોલનો વધુ સારા અને મજબૂત હોય છે. આ આંદોલનો તેમને થોડા સમય પૂરતા પણ ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જાય છે અને ઉચ્ચ ભુવનોને તે મનુષ્ય માટે ખુલ્લા મૂકે છે. આ આંદોલનો મનુષ્યને પહેલા કરતા પણ વધુ સારો બનાવે છે. યાત્રા કરવાનું આ મહત્વ છે અને તે એટલું અસર કરતા પણ છે. અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે યાત્રા સ્થળે આવેલા યાત્રાળુઓ ત્યાં ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ભાવના છોડીને જાય છે અને આ ભાવના તેમના પછી આવતા યાત્રાળુઓ પર અસર કરે છે. ભક્તિ અને શ્રદ્ધાની આ અસર ક્યારેય પણ ઓછી થતી નથી. જો આવા યાત્રા સ્થળોની અવગણના કરવામાં આવે તો તેની અસર જરૂર ઓછી થાય છે. જેમ કે અમુક ધર્મસ્થાનો પરદેશી આક્રમણોથી દિવસ્થ થાય છે અને બીજા ધર્મના લોકો આવા સ્થાનોની મુલાકાત લેવાનું બંધ કરે છે અને ધીરે ધીરે સમયાંતરે તેમની અસર પણ ઓછી થતી જાય છે. પરંતુ આવા કિસ્સાઓમાં પણ જો શરૂઆતથી જ ધર્મસ્થાનની પોતાની અસર મજબૂત હોય તો તે પાછી સદીઓ સુધી રહે છે. આથી જ ખંડેરો જોડે એક શક્તિશાળી તાકાત જોડાયેલી હોય છે. એક ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉદય બાદ ઇજિપ્શિયન ધર્મના અનુયાયીઓ ઓછા થઈ ગયા છે, પરંતુ આજે પણ કોઈ પણ સંવેદનશીલ માણસ જ્યારે તેના મંદિરોના ખંડેરોની વચ્ચે ઊભો રહે છે ત્યારે તેના શક્તિશાળી વિચારોની અસરથી મુક્ત રહી શકતો નથી. આ કિસ્સાઓમાં બીજી એક શક્તિ પણ કાર્યરત હોય છે. ઇજિપ્શિયન ઇમારતોનું બાંધકામ એવા ઈરાદાથી જ કરવામાં આવતું હતું કે તે તેના લોકો પર ચોક્કસ અસર કરે. હજુ સુધી આટલું અસરકારક બાંધકામ દુનિયામાં બીજે ક્યાંય જોવા આવ્યું નથી. આ અસરો એટલી જ પ્રભાવી હોય છે કે તેના ખંડેરો પણ મુલાકાત માટે આવતા બીજા ધર્મના લોકોને પણ એટલો જ પ્રભાવિત કરે છે. દરેક ધર્મના અભ્યાસ કરનાર માટે આનાથી રસપ્રદ વિષય બીજો કોઈ હોઈ જ ના શકે. તેણે દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મના સ્થાનોની મુલાકાત લઈને તેની અસર અનુભવવી જોઈએ. હવે આપણે વાત કરીશું ખંડેરોની. જેમ જૂની દુનિયાનું ધાર્મિક જીવન તેમના દેવાલયોમાં સંપર્કમાં આવીને અનુભવી શકાય છે, તેવી જ રીતે જૂની દુનિયાની રોજિંદા જિંદગીને તેમના મહેલો અને રહેઠાણોના ખંડેરોની વચ્ચે ઊભા રહીને અનુભવી શકાય છે. આના માટે ગૂઢ દ્રષ્ટિ વિકસેલી હોવી જોઈએ. મહેલો અને રહેઠાણોમાં જે તે જમાનાના લોકો વર્ષો સુધી રહેલા હોય છે. આ લોકોના પોતપોતાના અલગ અલગ વિચારો હોય છે. વિરોધાભાસી વિચારો એકબીજાની અસરો નાબૂદ કરી દે છે. તેમ છતાંય તે લોકોની સૌથી સામાન્ય બાબત કે જે તે પ્રજાતિની લાક્ષણિકતા હોય છે તેની અસર તરીકે સામે આવે જ છે. કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની વ્યક્તિગત લાગણીઓને દબાવીને આ અસર અનુભવી શકે છે. આવો પ્રયોગ કોઈ પણ વ્યક્તિને ઇતિહાસનો તટસ્થ અભ્યાસ કરવાને લાયક બનાવે છે. બીજી સંસ્કૃતિની પરંપરાઓ અને રિવાજો કે જે આપણને અચંબિત કરે છે કે ડરાવી મૂકે છે, તેમનો આવો તટસ્થ અભ્યાસ થવો જ જોઈએ. આમ કરવાથી આપણને જણાશે કે આપણે બીજી સંસ્કૃતિઓ વિશે
કેટલો ખોટો પૂર્વાગ્રહ બાંધીને બેઠા હોઈ શકીએ છીએ. અસ્તુ. अच्छा जी, गो अहेड हिंदी जी पार्ट 2। जी। तो हम भाग 2 पे आते हैं। ये भाग 2 में हम ज्यादा बात करेंगे स्थल, अवशेष और खंडर के बारे में। किसी संत के जीवन और मृत्यु के उपलक्ष्य में अक्सर एक चर्च या मंदिर का निर्माण किया जाता है, और सबसे पहले ऐसा मंदिर किसी ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जिसका उनसे कोई विशेष संबंध हो। वह यह स्थान हो सकता है जहां उनकी मृत्यु हुई थी, वह स्थान जहां उनका जन्म हुआ था, और जहां उनके जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी। बेथलेहम स्थित जन्म स्थान चर्च और यरूशलेम स्थित क्रूसीकरण के चर्च इसके उदाहरण हैं। साथ ही बुद्ध गया में स्थित विशाल स्तूप जहां भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था वो है। या फिर देखें तो विष्णुपद मंदिर, जहां माना जाता है कि विष्णु ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे। ऐसे सभी मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इस विचार से बनाए जाते हैं कि वह स्थान विशेष रूप से धन्य है, विशेष रूप से एक चुंबकीय शक्ति से युक्त है, जो युगों युगों तक बनी रहती है और उन लोगों पर विकीर्ण होती है और उन्हें लाभान्वित करेगी जो स्वयं को इस प्रभाव क्षेत्र में लाएंगे। जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने वह पद प्राप्त किया था, जिसने उन्हें वह गौरवशाली उपाधि प्रदान की, वह एक चुंबकत्व से युक्त है, जिसके कारण यह दिव्य दृष्टि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सूर्य के समान से चमकता है। ये उन लोगों पर जो स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रभाव से के प्रति संवेदनशील हैं, या वो जानबूझकर स्वयं को हार्दिक भक्ति की भावना में रखकर ऐसे प्रभाव के प्रति अस्थायी रूप से संवेदनशील बनाते हैं, सबसे प्रबल प्रचंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वे परिकल्पित होते हैं। द लोटस जर्नल में बुद्ध गया पर एक लेख में एल्कियन ने लिखा है, जब मैं श्रीमती बेसिन के साथ कुछ देर पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा, तो मैं भगवान बुद्ध को वैसे ही देख पाया जैसे वो वहां बैठकर देखते थे। वास्तव में उनके ध्यान का अभिलेख आज भी इतना प्रबल है कि उन्हें अभी भी देखने के लिए केवल थोड़ी सी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। मुझे वे कहते हैं कि मुझे 588 ईसा पूर्व में उस जीवन में उनसे यानी बुद्ध से मिलने और उनके अनुयायियों में से एक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिससे उनके लिए यानी एल्कियोनी के लिए इस वर्तमान जीवन में उन्हें फिर से देखना बहुत आसान हो गया। लेकिन अल्कियोना का मानना है कि लगभग कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी संवेदनशील है, वो बुद्ध गया में कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत रहकर ही उनके दर्शन कर सकता है, क्योंकि वहां की हवा उनके प्रभाव से भरी हुई है और अब भी वहां हमेशा महान देवता चुंबकत्व में स्नान करते हैं और उस स्थान की रक्षा करते हैं। ये अल्कियोनी जी का कहना था। अन्य चर्च, मंदिर या दागोबा किसी भी महान व्यक्ति के अवशेषों के होने से पवित्र होते हैं, और यहाँ भी विचारों का संबंध स्पष्ट है। जो लोग इन विषयों से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए किसी संत की अस्थि के टुकड़े को श्रद्धांजलि देने का विचार उपहास करना आम बात है। हालांकि अस्थि को श्रद्धांजलि देना अनुचित हो सकता है, फिर भी उस अस्थि से निकलने वाला प्रभाव पूरी तरह से वास्तविक हो सकता है और गंभीर ध्यान देने योग्य है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है कि अवशेषों के व्यापार ने पूरी दुनिया में एक और धोखाधड़ी और दूसरी ओर अंधविश्वास को जन्म दिया है, लेकिन इसे यह तथ्य भी बिल्कुल नहीं बदलता कि एक वास्तविक अवशेष एक मूल्यवान वस्तु हो सकती है। किसी महान व्यक्ति के भौतिक शरीर का, या यहाँ तक कि उसके भौतिक शरीर को धारण करने वाले वस्त्रों का भी, जो कुछ भी रहा है, वो उनके व्यक्तिगत चुंबकत्व से प्रभावित होता है। इसका अर्थ ये है कि ये विचार और भावना की शक्तिशाली तरंगों से आवेशित है, जो पहले से उनसे निकलती थी, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक विद्युत बैटरी को अवशेषित किया जा सकता है। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, उस पर पड़ने वाले विचारे, तरंगों और मंदिर में आने वाली भीड़ की आस्था और भक्ति से इस शक्ति को और भी तीव्र और स्थायी बना सकते हैं।
ऐसा तब होता है जब अवशेष असली होता है, लेकिन अधिकांश अवशेष असली नहीं होते हैं। फिर भी हालांकि उनमें अपनी कोई प्रारंभिक शक्ति नहीं होती, समय के साथ उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि एक नकली अवशेष भी प्रभावहीन नहीं होता। इसीलिए जो कोई भी स्वयं को ग्रहणशील बनाता है और किसी अवशेष के निकट जाता है, वह उसके प्रबल स्पंदनों को अपने भीतर ग्रहण करेगा और शीघ्र ही उनके अनुकूल हो जाएगा। चूंकि ये स्पंदन निसंदेह उन सभी स्पंदनों से बेहतर और प्रबल होते हैं जिन्हें वह स्वयं उत्पन्न करता है, इसीलिए यह उसके लिए एक अच्छी बात है। कुछ समय के लिए ये उसको एक उच्च स्तर पे ले जाता है, उसके लिए एक उच्चतर जगत का द्वार भी खोल देता है। और हालांकि इसका प्रभाव केवल अस्थायी होता है, यह उसके लिए अच्छा ही होगा। एक ऐसी घटना जो उसे शेष जीवन में उसके न घटने की तुलना में थोड़ा सा बेहतर बना देगी। तीर्थ यात्राओं का यही औचित्य है, और ये वे प्रायः वास्तव में प्रभावशाली भी होती हैं। किसी पवित्र व्यक्ति या अवशेष द्वारा प्रदान की मूल आकर्षण शक्ति के अतिरिक्त जैसे ही तीर्थस्थल स्थापित हो जाता है और बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगते हैं, एक और कारक सक्रिय हो जाता है, जिसके बारे में हम अभी गिरजाघरों और मंदिरों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं पार्ट 1 में। यह स्थान इन सभी आगंतुकों की भक्ति भावना से ओतप्रोत होने लगता है, और वे जो कुछ भी पीछे छोड़ते हैं उसका प्रभाव उनके उत्तराधिकारियों पर पड़ता है। इस प्रकार इन पवित्र स्थलों में किसी एक का प्रभाव समय बीतने के साथ आमतौर पर कम नहीं होता, क्योंकि यदि मूल शक्ति थोड़ी कम भी हो जाती है तो दूसरी ओर भक्ति के नए आगमन से वह निरंतर पोषित होती रहती है। वास्तव में एकमात्र ऐसा मामला जहां शक्ति कभी क्षीण होती है वह है किसी उपेक्षित तीर्थस्थल का। जैसे उदाहरण के लिए जब किसी देश पर किसी अन्य धर्म के लोगों का विजय हो जाता है, जिनके लिए पुराने तीर्थ कोई भी मायने नहीं रखता, फिर भी यदि हम यह प्रभाव मूल रूप से पर्याप्त रूप में प्रबल हो रहा हो तो कई शताब्दियों तक लगभग बिना रुके बना रहता है। और इसी कारण खंडरों के साथ भी अक्सर ऐसी शक्तिशाली शक्ति जुड़ी हुई होती है। उदाहरण के लिए एक है मिस्र। मिस्र के धर्म का ईसाई युग के बाद बहुत से कम पालन किया गया है। फिर भी कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इसके किसी भी मंदिर या खंडर के बीच खड़ा होकर उसके विचारों की धारा से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस विशेष उदाहरण में एक और शक्ति सक्रिय होती है, मिस्र की वास्तुकला। मिस्र की वास्तुकला एक विशिष्ट प्रकार की थी, जिसे जानबूझकर अपने उपासकों पर एक विशिष्ट प्रभाव डालने के उद्देश्य से बनाया गया था, और शायद किसी भी वास्तुकला ने अपने उद्देश्य को इससे अधिक प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया है। जो टूटे हुए टुकड़े बचे हैं वे भी इसका प्रभाव कम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन विदेशी जातियों पर भी जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता के स्वरूप से पूरी तरह अनभिज्ञ है। तुलनात्मक धर्म के उस विद्यार्थी के लिए जो संवेदनशील है, इससे अधिक रोचक अनुभव और कोई नहीं हो सकता। संसार के प्राचीन धर्मों के आकर्षण में स्नान करना, उनके प्रभाव को किसी प्रकार अनुभव करना, जैसा कि उनके अनुयायियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। थिब्स या लक्जर की अनुभूतियों को तुलना पार्थेनोन या गिरगेंटी के या सुंदर यूनानी मंदिरों से करना, या स्टोनहेंज की अनुभूतियों को युकाटन के विशाल खंडरों से करना, ये सब बहुत ही सुंदर है। प्राचीन विश्व के धार्मिक जीवन को उसके मंदिरों के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है, लेकिन उसी प्रकार उन लुप्त राष्ट्रों के दैनिक जीवन में भी उनके महलों, घरों, खंडरों के बीच खड़े होकर संपर्क स्थापित करना भी उतना ही संभव है। इसके लिए शायद किसी अन्य की तुलना में अधिक तीक्ष्ण दिव्य दृष्टि की शायद आवश्यकता हो। मंदिर में व्याप्त शक्ति शक्तिशाली है क्योंकि वो काफी हद तक एकाग्र है, क्योंकि सदियों से लोग प्रार्थना या भक्ति या एक ही प्रमुख विचार के साथ वहां आते रहते हैं, और इसीलिए इसका प्रभाव
अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरी ओर अपने घरों में वे अपना जीवन विभिन्न प्रकार के विचारों और परस्परी विरोधी हितों के साथ जीते हैं, जिससे उनकी धारणाएं अक्सर एक दूसरे को रद्द कर देती है। फिर भी जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, उनकी सभी भावनाओं का एक प्रकार का लघुत्तम समाप्त वय उभरता है, जो एक जाति के रूप में उनकी विशेषता है, और इसे वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके पास उन व्यक्तिगत भावनाओं को पूरी तरह से दबाने की कला है, जो उसके लिए कई अधिक निकट और अधिक स्पष्ट है, और जो बहुत पहले के समय के जीवन की मंद प्रतिध्वनि को सुनने को लिए तत्परता से सुनता है। ऐसा अध्ययन अक्सर हमें इतिहास का एक अधिक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाता है। जो रीति रिवाज हमें चौंकाते हैं या भयभीत करते हैं, क्योंकि वे हमारे अपने रीति रिवाजों से बहुत दूर है। इस प्रकार उन लोगों के दृष्टिकोण से उन पर विचार किया जा सकता है जिनसे वे परिचित थे, और उन्हें इस प्रकार देखने पर अक्सर पहली बार हमें एहसास होता है कि हमने अतीत के उन लोगों को कितनी गलत तरह से के समझा है। यही विचार के साथ यही पार्ट 2 खत्म होता है। धन्यवाद। सर आप म्यूट हैं। धन्यवाद अर्चना जी। और सभी स्पीकरों से मेरा निवेदन है कि वे वीडियो ऑन करें। कोमल जी। चली गई। यस धवल जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? That's all from कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप धवल जी? no, that's all from my side. ओके। कोमल जी आप? भाई त्रिवेणी का नियम है, कई बार क्या होता है कुछ चीजें बोलते बोलते ख्याल आती हैं, कोई उदाहरण ख्याल आता है तो वो भी हम कह सकते हैं। कोमल जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना चाह रही है इसको, सेंटर ऑफ मैग्नेटिज्म? नहीं 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 नहीं, आई थिंक आई एम फिनिश्ड। अच्छा जी आप? हाँ, मैं एक्चुअली ये थैंक यू धवल जी, आपने बहुत ही सुंदर लिखा है, और मैं आज पहली बार पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चला कि हम कई बार कई जगह पर, शायद हर्षवर्धन भाई उस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकेंगे, कई जगह पर जाते हैं तो कुछ हमको फील होता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है, और जैसे कोई मंदिर स्पेशली, वहां एक भक्ति भाव उभरता है, एक अकारण ही हम बहुत सारे इमोशंस फील करने लगते हैं। तो जो आपने कहा बहुत ही खंडहरों के बारे में, और बहुत ही मुझे लग रहा है कि वो वाइब्रेशन यानी वो रहे होंगे कई सालों तक, तो जो अनुभूति होती थी आज मैंने पहली बार उसका साइंटिफिक रीजन जाना। सो आई एम सो थैंकफुल कि मुझे, और ग्रेटफुल कि मुझे ये जानने मिला। तो कई बार वो नेगेटिव भी फीलिंग आती है, अच्छी वाली तो आई है, तो वो भी क्यों होता होगा? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। हर्षवर्धन भाई आप ऐड कीजिए, फिर समापन की ओर चलते हैं। Yes, yes, yes. Very nice subject. Actually, we have to have the understanding of the different kinds of structures, especially temples, cathedrals, and mosques. They have their own gravitational force in the way that we can have the spiritual kind of a kind of understanding that we can go deeper into the understanding of those things which are really hidden from our nature. It is one in Bible called the ecclesiastical understanding. Of course, the churches are built for the worship of the Almighty God. In the same way, temples are also built
and we find the mosques also where the people go and worship. The main point is only about the understanding of the love, brotherhood, and the unity of life. That is the main thing. If you go to the church or if you go to the temple, you will find that you are not different from the world, where you have to have the love and devotion for every kind of human being or every person, or even the particular things in nature which we find that they never speak, they never utter, but we find that here also the stones speak. When the stones speak means they have the sensitivity. In Jain temples, we have found out certain kinds of music. When you have the stroke on different pillars, you will find different musical notes. Why that is built like that? It is the intelligence of those sculptors. So in that way, we find that they were built in that way. Even in certain mosques also, if you go, you will find deeper peace, a kind of total understanding of the Almighty God, and you feel a kind of peace in that is the inner peace. Whatever we find outside the world, we forget that when we are inside the mosque, and we are really rejuvenated. In other also places, we find this kind of serenity, because that serenity is only the basic understanding of the nature of the human mind. The mind should be totally serene, silent. So we find that okay, all these structures are built in that. Otherwise, see, people live in the houses, they have their own world, they have their own villages and cities and everything. But the thrust is given on this particular kind of structures. They are given the names according to the religions. If the Hindus are there, they will build the temples. Accordingly, if the Christians are there, they will build the cathedrals and churches. So we find this kind of differences. But the main aim is to find the effect and the strength of Almighty God, where we can have all this strength and our own inner peace so that we can do our work best, we can do our duties well, we can help each other, we can find the persons in society to help one another. So, in this way, the lesson is very clear. It is a lesson that is to be understood and to be learnt. So, I think this today's topic, I must congratulate Dawal because he studies this kind of books, especially of leadbeater, sir. And in that way, the symbolical aspects are very important, and whatever he has today delineated the subject in a very nice way. So I congratulate him. I also congratulate Komal, who has translated in Gujarati. She has that band of mind to have the proper understanding of that particular work. And also for Hindi translation, Archana ji, I must congratulate you because that flow of Hindi is so natural, and in that way you spoke very nicely, and really it is apt to the subject and also time bound kind of activity. So my congratulations to all the three. Thank you very much, Taral. Yes, sir. Thank you, sir. सर मैं कुछ खाली सवाल है या शेयर करना चाहती हूँ धवल जी आपसे ऐसे शायद इससे से कनेक्शन हो या ना हो। हिस्टोरिकली दो प्लेस अपने इंडिया के स्थापत्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जलियांवाला बाग और एक है वीर सावरकर की अंडमान वाली जेल। दोनों जगह जहां भी जब भी कोई जाता है जो थोड़ा सा भी संवेदनशील होता है तो वहां वो एक तरह की करुणा या तो अफेक्शन या तो पेट्रियोटिज्म, जो भी शब्द लो, वो जगह पे जो कुछ वो बीता है, वो खंडर है जलियांवाला बाग, या तो वो जो कोठड़ी है जेल की जहाँ सावरकर रहते हैं, जो जो लोग गए हैं उन्होंने बताया कि वहां कुछ अलग सी संवेदना होती है।
So if you can, I mean, if it is pious or it is, I mean, can you throw some light on it? धवल? So it is basically the absorption of the feeling by the walls, which we discussed, right? So जो भी walls है, right, या फिर wooden furniture है, even the clothes which we wear, right, they absorb the feelings or the thought forms or the thoughts of the person. So they are always having the influence of the persons who wear them, right? So that is it is very strictly mentioned in occultism that those who don't want to be affected by the vibrations of the other people, right? They never go out into the crowd. Even they strictly keep their utensils for in which they eat the food, right? They keep it strictly for themselves only. They do not eat in any other person's utensils. So all these things they have the vibrational effect of the persons who utilize them. So जैसा आपने कहा कि वीर सावरकर की कोठरी कहे या फिर जलियांवाला बाग, राइट, जहाँ पे इतना बड़ा मैसेकर हुआ था, राइट. सो even the in this book it is mentioned about the stockyard of the Chicago, where butchery happens, right? The cows are killed. So Annie Besant, when she was in the train near Chicago, she could feel the feelings of those terrible cries of the animals even from the train when she even did not enter the Chicago, when she was near to the Chicago, and she could sense those terrible feelings sitting in the train. So all those environment have this kind of radiation, and all these furnitures, walls, although they are inanimate things, they radiate those vibrations. And the effect, terrible effect, is not on only on adults are more resistant to this kind of effects, but kids are very sensitive to this effect. And it is said that where this butcher house of Chicago is there, and the nearby streets where kids play on the street, they have the effects of this vibration, and they try to kill each other under this influence. So kids are very sensitive to this kind of effect. वही आपका जो वाक्य लास्ट वाला है ना, कि हम समझते हैं कि उसके कारण क्या क्या हमने अन्याय देखा, हम अपने हिसाब से सोच रहे. दैट वेरी प्रोफाउंड सेंटेंस, द लास्ट सेंटेंस इज सच अ प्रोफाउंड थिंग. रीथिंक. आई एम सो थैंकफुल टू यू टू शेयर दिस नॉलेज. Thank you so much. Thank you. And Ashnali, let's go for the last Shakti. ओम सर्वे वै सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you. Thank you. Thank you, Dhaval. Thank you. Komal. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. See you. Bye.